again very important topic hai. Encryption basically means scrambling your data in a way that cannot be read by someone. Why are we talking about encryption? Because we are talking about data. Data has to be secure. Agar aapke paas data, and if you have not made it secure, the data is of no use. Because if anyone can get hold of your data, then obviously it's a big problem. इसके लिए encryption of data came in, so that hackers, anyone else cannot intercept, and they cannot get hold of your data. Okay, so this is what actually encryption in simple words means: unauthorized access to the data which should not be available to these people. Okay, this is known as encryption. This can happen in a local area network. This can happen or within the internet. This can happen anywhere. ठीक है? अब encryption के लिए there is a Caesar cipher. Okay? इसके लिए Caesar cipher के लिए मैं इन दोनों के लिए मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, वो आपने देखनी है, बाद में शेयर करूंगा. ठीक है? ओके, सीजर साइफर क्या है? इसमें जूलियस सीजर, इसमें क्या था? इट वाज अ वेरी गुड वे. फॉर एग्जांपल, ये आपका ओरिजिनल था अल्फाबेट्स, और इनक्रिप्टेड था. ये इनक्रिप्टेड में हम ये कहते थे, फॉर एग्जांपल, आई एम सेंडिंग अ मैसेज एंड आई वुड से दैट आई एम शिफ्टिंग 3 letters. ओके, 3 letters फॉरवर्ड, व्हिच मींस अगर मैं 3 शिफ्ट करता हूं, सो A B C D, तो A will become D, B will become E. You get my point? Yes or no? You see, अगर मैं 3 शिफ्ट किए ना आगे, तो A ये हो जाएंगे. So this means अगर मैं शिफ्ट करता हूं, and if I want to write hello, H is what? H is K. E is what? E is H. L is what? L is O. O is what? O is R. So you see what happens? This is actually K-H-O-R. So core basically means hello. So no one would know what I'm doing. It was very basic way of encryption. But obviously, मुझे shift करना पड़ता था. So if I shift by -3, it means उल्टा करूंगा. +2 means A will become C, so on and so. You get my point? Yes, sir. This was actually known as Caesar cipher. It was one of the very basic encryption method that was invented by Julius Caesar at that particular time. Okay. अब फिर हमारा टॉपिक आ जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक. अच्छा, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ. ये बहुत लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो बेटा, बात सुनो. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज एन ओल्ड वे जिसमें व्हाट वी हैव इज पब्लिक की, और वो पब्लिक की कैन बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा. मगर दिस वाज नॉट सेफ, क्योंकि पब्लिक की जो होती है ना, पब्लिक की वो हर एक को दी जाती है. तो जब पब्लिक की व्हेन वी गिव इट टू एवरीवन, इट विल नॉट बी सेफ. सो दिस इज द रीजन व्हाई दैट symmetric encryption was not a very safe method, because it had the use of public key. Okay, so we had to have a better way. अब इसके लिए क्या था? Now we have is asymmetric encryption, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. Let me explain you asymmetric encryption with a very good example, जो आपको यहां से समझ नहीं आएगी. देखो बेटा, बात सुनो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल ये देता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है. ओके, तो उस बॉक्स के लिए आई नीड 2 keys टू ओपन. मैंने अगर इसको ओपन करना है, मेरे पास एक होनी चाहिए पब्लिक की, और एक मेरे पास होनी चाहिए प्राइवेट की. सो ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज 2 keys आई कैन ओपन अप दिस बॉक्स. ठीक है, एंड आई हैव द कीज. ठीक हो गया. I will open up this box, और पब्लिक की और प्राइवेट की what I'll do is, मैं प्राइवेट की अपने पास रख दूंगा, और पब्लिक की तो ऑब्वियसली पब्लिक वो तो किसी के पास भी होगी, कोई मसला नहीं है. मगर याद रखना, मैं कह रहा हूं कि द बॉक्स कैन ओनली ओपन अप व्हेन आई हैव द प्राइवेट की एंड पब्लिक. ठीक हो गया. सो व्हाट यू डू इज, यू सेंड दिस टू द सर्वर. आपने रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो आप ये अपना जो बॉक्स का मतलब है ब्लॉक, whatever. You send this to the server. Server पे जाता है over the internet. When it reaches the server, this box that you have actually is opened up. Open है, कुछ नहीं होता. Hacker कुछ भी कर ले. Open है, उसमें तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ. अब जो आपका server है, server has your request. It's an open request. Server will put your message that you want, that you requested for, inside that box.
and the server will close the box. So remember, once you close the box, who can open up the box? Only you. Why? Because the box will be opened up who has the private key and the public key. So the सर ये दोबारा समझा दें, ये पूरा प्रोसेस समझ नहीं आ रहा. अच्छा, मैंने बड़े बड़े बेस्ट वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा टफ है, बुक से आपको समझ नहीं आना था. मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सो गौर से सुनो. मैं ये कह रहा हूँ कि यू कैन कंसिडर एनक्रिप्शन, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, एज लेट्स से अ बॉक्स जिसमें you can open the box with the help of private key and public key. Yes or no? सर प्राइवेट और पब्लिक की क्या होती है? A key which is used to decrypt the data. ओके. Two keys हैं डेटा को डिक्रिप्ट करना, वरना तो आपकी Okay. कोई भी ईमेल आ रही हो कोई भी पढ़ लेगा. गेट माय पॉइंट. सो Yes, एक sir. पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है. ठीक है. पब्लिक की का मतलब होता है एवरीवन कैन गेट एन एक्सेस टू, किसी को मिल सकती है. प्राइवेट की का मतलब क्या होता है? ओनली यू हैव इट. समझ Only आई? you can get it. या ओनली यू हैव इट ना. सो इस बॉक्स को हाउ विल आई ओपन इट? with the help of public and private. Yes or no? Yes, sir. आपने बॉक्स को ओपन कर दिया बॉक्स को ना, राइट? आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को. when it goes to the server, your box is opened. Agree with me? Yes, sir. And the server puts the message inside the box. Agree with me? Yes, sir. And the server closes the box. Now, if the server closes the box, can anyone open up the box? No, sir. If it's a private key, then no one can open it except me. Who can open it? I can open it if it's a private key, and if it's a public key, then anyone can open it. Exactly. What you're trying to say is that only the sender who has the private key can open up the box. Yes or no? Yes or no? Sir, anyone having a public key can open up the box, No, like no, anyone randomly. no. How can it? I just told you that the box will open up if you have the public key and the private key. Yes, How sir. can how can someone open the box if they have a public key? Won't make a difference. You have the public key, but you don't have the private key. So how can you open it? You can't open it. And who can open it? Who has the private key? The owner. Exactly. So once you get the message, and while the message, content, file, data, जो भी इस box के अंदर है, I don't know. If it gets intercepted by a hacker, can the hacker open it? No. This means, have we not safely invented a way in which the data reaches to the client, and the client can only open it because the client has the private key? Get the point? Yes, sir. Okay. This is known as Yes, asymmetric encryption. You get my point? Yes, sir. Okay? The best way I can explain is this. Okay. So ये information इसमें आ सकती है, ये इसकी examples हैं. And HTTP actually होता क्या है? Basically, let me explain this. Application of hypertext transfer protocol is basically asymmetric encryption. It is this. HTTPS is asymmetric encryption. ये ज़हन में रखना. Okay? अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो एंड यू टाइप mrsaem.com, आपने ऑटोमेटिकली देखा होगा उसका HTTPS लिखा आता है, बिकॉज इट मीन्स दैट whenever you request for information on this website, it will be transferred securely. So HTTPS is hypertext transfer protocol, is the protocol that uses a secure socket layer or transport layer security. Again, सारे का मकसद यही है कि we are using asymmetric encryption in HTTPS, और दूसरा होता है HTTP. HTTP होता है जिसमें आप asymmetric यूज नहीं करते and it's not secure. इसलिए अब HTTP अब यूज ज्यादा नहीं होता. All the websites need to be in HTTPS. आपने नोट किया होगा ना, किसी भी वेबसाइट के पहले HTTPS लिखा आता है. क्यों लिखा आता है? Because all the data that is being transferred, it will be transferred securely. You get my point? So it's all related. You don't need example दी हुई है. ठीक है? ये सर आपका आ गया वो एग्जांपल्स जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके. नाउ लेट्स कम
नाउ यू हैव डिफरेंट, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं चीजें, वी हम प्रैक्टिकल में वी हैव डिस्कस वैलिडेशन, आपको ये तो सब पता ही होगा। आई कैन गो फास्ट बिकॉज यू नो व्हाट रेंज चेक इज, हमने किया था ना, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एक्स में किया हुआ है, have we यस सर किया हुआ। किया हुआ है, बिल्कुल। हमने हमने टाइप चेक भी डिस्कस किया हुआ। टाइप चेक का मतलब आता है कि आई कैन राइट ओवर हियर इज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क ए स्टार, द सेकंड कैरेक्टर शुड बी ए, याद आया? Do you remember the point, right? So when we emphasize on a character, it's known as a type check. Do you remember that? यस सर। Then we have length check. Length check is that if I write over here is question mark, like 1, 2, 3, 4. If I write 5 question marks, it means the length of that word will be 5 characters. Yes or no? यस सर। Okay. Format सर check. these are the validation rules that you send me. Exactly. Oh yes, I had to send you. You reminded me. I'll send you all this. I will send you all of these. Consistency check ये भी जो मैं भेजूंगा ना, you will practice, तो ये सारा उसमें ही है. Okay? You get the यस सर। point, right? यस सर। अच्छा अभी देख लो कितना पड़ा है, क्योंकि मैं उसके मुताबिक आई वांट टू फिनिश बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट इतना ज्यादा कि आपको समझना है। वी हैव इस चेक डिजिट, फिर वेरिफिकेशन, then we have is control total, then we have is need for verification, right? Data processing, uh, online processing, electronic funds transfer, real time तो processing. ये बहुत लंबा चैप्टर है। जी बेटा, नहीं ये एक आज के दिन में नहीं कर सकते, मगर डजेंट मैटर बेटा। हम इसको अगली क्लास में हम ये उससे अगली में कर लेंगे, मगर लेट मी जस्ट पॉज इट फॉर अ व्हाइल।